live streaming. If you are want to improve your English listening as well as spoken, and so it will be also with the help of vocabulary. So if you want to improve your skill, so stuck with me. So join this family. So with the gradually you will inshallah improve your everything. So today is I decided to increase, I've decided to add vocabulary in this video. So let's start from vocabulary. Nijat Dahinda, a person who give life, a person who free from violations, free from dishonesty, free from un, unjustification. That is called savior. Savior, mankind, mankind, insaniyat, mankind, insaniyat, mankind, insaniyat, unparalleled, बेमिसाल, unparalleled, बेमिसाल, charm, दिलकश, दिलकशी, trackless, without track, बेसुराग, desert, सहरा, desert, सहरा. Repeat after me. So in this way you will also improve your vocabulary too. Desert, सहरा, dunes, रेत के टीले, dunes, dunes, रेत के टीले, dazzling, dazzling, चुंदिया देने वाली, dazzling, चुंदिया देने वाली, डायलमा, डायलमा, मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल सूरत हाल, डायलमा, मुश्किल सूरत हाल, स्टैरी, स्टैरी, तारों भरी. Today I've included vocabulary in your class. So vocabulary is also very important, very essential to enhance listening as well as very तारों भरी, excited, excited, उकसाया, उकसाया, imagination, imagination, when you think something into your mind, so that is called imagination, 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 travelers, travel, travel, and travelers, a person who travels, that is called traveler, and plural of traveler is travelers. Red sea, red sea, there is a type of sea, that is bahirae ahmar, bahirae ahmar, possessed. If someone has something, that is called he has that thing, and that is possessed. Possessed, malik hona, malik the. Past, possess, possessed, malik the. Remarkable, remarkable, shandar, something that is matchless,
Something that is matchless is called remarkable. Memory. Memory. I think that that is into your mind is called memory. Memory, not memory. 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 Hafza. Eloquent. 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 Fasih. Eloquence. 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 Fasahat. Expression. Expression. Izhar. Expression. Izhar. Poetical. Competition. Poetical. Competition. Poet. Poetical. Shairana. Competition. Muqabla. Wonder. Wonder. Taajub. Strange. Wonder. That is that thing is that incident or event is wonderful. हैरत अंगेज तज्जुब वाला. Bestowed with. Bestowed with. के साथ अता किया. उकाज. Ukaz is a name of place. Ukaz is a name of place. Ukaz. Narrated. Narrated. बयान किया. Narrate. बयान करना. It's narrated. ये बयान किया जाता है. Narrated. I will also take your comments too. Witness. Witness. गवाह. शाहिद. Witness. गवाह. शाहिद. Exclusively. Exclusively. खुसूसी तौर पर. Exclusively. खुसूसी तौर पर. Promulgation. Promulgation. नशरो अशात. तशहीर. ऐलान. Something that is announce that is announced in written form or in printing in electronic media, that is through radio, through television. Promulgation. नशर अशात. किसी चीज को बयान करना. तशहीर करना. Dispensation. Dispensation. निज़ाम कुदरत. पैगाम इलाही. Preservation. 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 हिफाजत. Verge. Verge. A side of anything. किनारा. Chaos. 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 बदनज़मी. इंतशार. Civilization. Civilization. तहजीब. Civilization. तहजीब. Eradicate. Eradicate. जड़ से उखाड़ना. Eradicate. जड़ से उखाड़ना. Ignorance. Ignorance. लाइल्मी. Ignorance. लाइल्मी. Ignorance. लाइल्मी. Ignorance. लाइल्मी. Solitude. Solitude. तन्हाई. Solitude. तन्हाई. Meditation. Meditation. गौर फिक्र. मुराकबा. To look something with carefully, that is called meditation.
remembrance, remembrance, यादगार, remembrance, remembrance, the celebration of his birthday was remembrance for everyone's remembrance, याद, overflowing, overflowing, लबरेज, over, overflow, चीज का भर जाना और फिर वो बहना शुरू हो जाना, लबरेज, ओवरफ्लोइंग, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, गहरा, प्रोफाउंड, गहरा, प्रोफाउंड, गहरा, कंपैशन, कंपैशन, रहम, हमदर्दी, compassion, compassion, theology, theology, दीनियात, social evils, समाजी बुराइयां, social evils, समाजी बुराइयां, cruelty, cruel, cruelty, जुल्म, cruelty, जुल्म, injustice, opposite of justice, इंसाफ की opposite नाइंसाफी, injustice, 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 abandon, abandon, छोड़ना, abandon, छोड़ना, move on another page, prophethood, prophethood, रिसालत, conveyed, पहुंचाया, convey, convey, conveyed, पहुंचाया, convey, पहुंचाना, light giving, light giving, लाइट रोशनी, गिविंग देना, चरागे हदायत, पीरियड, पीरियड अरसा, प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना, बाज़ाब्ता तौर पर, प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड, ऐलान करना बाज़ाब्ता तौर पर, वननेस, वहदानियत, वननेस, वहदानियत, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, एम्बॉडीमेंट, 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 पैकर, मुजस्सम, सुपरस्टिशंस, तोहम परस्ती, believe something that if there is a cat coming front of me, so there will be a bad incident with me, so similar other incidents, बद तोहम परस्ती कि ये जो काली बिल्ली आगे से गुजर गई है तो अब कोई नुकसान होने वाला है, इसी तरह बहुत सारी चीजें, सुपरस्टिशन, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ, अदम यकीन, बिलीफ यकीन, डिसबिलीफ अदम यकीन, सेटअप, 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 तसव्वुर, सेटअप, सेटअप, कायम करना, सेटअप, कायम करना, कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन, तसव्वुर, कॉन्सेप्शन, तसव्वुर, डिवाइन, 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 खुदाई,
ब्लिस, ब्लिस खुशनुदी, ब्लिस खुशनुदी, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग खतरा, डोमिनेंस, डोमिनेंस गलबा, डोमिनेंस गलबा, फेगन, फेगन काफिर, फेगन, रिनाउंस छोड़ देना, रिनाउंस छोड़ देना, रिनाउंस छोड़ देना, रिनाउंस छोड़ देना, डेलीगेशन वफ्द, डेलीगेशन वफ्द, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन रोकना, रेस्ट्रेन रोकना, एनमिटी दुश्मनी, एनमिटी, एनमिटी दुश्मनी, सेंट फॉर बुला भेजना, सेंट फॉर बुला भेजना, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन वजाहत करना, एक्सप्लेन्ड वजाहत की, सिचुएशन, सिचुएशन सूरत हाल, मेमोरेबल, मेमोरेबल यादगार, ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक ताकत, मुतहर्रक करने वाली ताकत, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, डाउन टू दी प्रेजेंट डे, डाउन टू दी प्रेजेंट डे, तब से अब तक, तब से अब तक, डाउन टू दी प्रेजेंट डे, डाउन टू दी प्रेजेंट डे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली। नेक्स्ट वन इज प्रोक्लेमेशन, बाज़ाब्ता ऐलान, प्रोक्लेमेशन बाज़ाब्ता ऐलान, पैरिश फना होना, पैरिश फना होना, इम्प्रेस्ड मुतासिर, इम्प्रेस्ड मुतासिर, फर्म, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इरादा, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इरादा, फॉर सेक, फॉर सेक, फॉर सेक छोड़ देना, फॉर सेक छोड़ देना, इम्ब्यूड, इम्ब्यूड सरशार, रिजॉल्व पक्का इरादा करना, रिजॉल्व पक्का इरादा करना, इनकाउंटर्ड आमना सामना होना, आमना सामना हुआ, इनकाउंटर्ड आमना सामना हुआ, एलिवेटेड, एलिवेटेड बुलंद किया, एलिवेटेड बुलंद किया, स्पिरिचुअल रूहानी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल रूहानी, डोमेन इलाका, डोमेन इलाका, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट्स फतूहात, कॉन्क्वेस्ट्स फतूहात,
everlasting, daimi, everlasting, daimi, acknowledged, acknowledged, तस्लीम किया, acknowledged, तस्लीम किया, influential, influential, बार सूख बा असर, influential, बा असर, his historian, तारीखदान, history, historian, तारीखदान, responsible, responsible, जिम्मेदार, ऑविस, मरहून मिन्नत होना, एथिकल, अखलाकी, एथिकल, अखलाकी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, उसूल, इन एडिशन, अलावा अजी, इन एडिशन, अलावा अजी, प्रोजर, प्रोजलीटिजिंग, प्रोजलीटाइजिंग, तबलीग, प्रोजलीटाइजिंग, तबलीग, इस्टेब्लिश, कायम करना, इस्टेब्लिश, कायम करना, प्रैक्टिसेस, रसूमात, प्रैक्टिसेस, रसूमात, बियरर ऑफ गुड, अच्छी खबर लाने वाला, बियरर ऑफ गुड, अच्छी खबर लाने वाला, बियरर ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर लाने वाला, वार्नर, वार्न, खबरदार करना, वार्नर, खबरदार करने वाला, परमिशन, इजाज़त, परमिशन, इजाज़त। जी, ये कुछ वोकैबुलरी थी जो मैंने सोचा कि हमारी वोकैबुलरी भी डिस्कस होनी चाहिए। हम टॉकिंग भी कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, पोइट्री भी हमारी चल रही है, तो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी का सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी जो है वो आज बताई है। लीजिए, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स लेता हूँ और साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा उसको वज़ाहत भी करता चला जाता हूँ। शैडोज़ टीवी has joined me. I say him welcome in this live streaming. The purpose of this live streaming is to enhance our English skill. Basically, English is not a subject. It's belong to skill. Basically, English is not a subject. So don't treat it as a subject, and don't try to be use your bookish way of communication. There is something different. Spoken is spoken belongs to sound. So understand sound and also communicate other person through sound, not indulge in grammar, in principle, in sequence, and anything else. Just try to understand communication through others' gestures. Try to understand English through other person's gestures. So, what is the style of his hands? So, what is the style his head? Whether he is talking in yes style or no style.
and also use words like I'm, I'm, your, I'm, your, he's, she's, not she is, he is. He is a word of subject, but talking is something else. Use she's, he's, he is, no, he's, your, I'm, there. Try to understand sound. Try to communicate with other persons in sound, not in as a subject. Similarly, I'll, I'll, he'll, she'll, we'll, they'll, you'll. This is spoken, but in subject, in book language, that is I shall, you will, she will, they will. So this is a subject English, not spoken English. Similarly, let me, let me, मुझे इजाजत दो. Let me do this work. मुझे इजाजत दो, मैं ये काम करता हूँ. This is a subject English, not spoken English. Spoken is English is let me do this. Let me, let me, let me do this. This is sound English. This is spoken English. Let me do this. That is subject English. Spoken English is let me do this. Let me try this. Let me do this. Let me, let me. Similarly, gonna, gonna, going to, gonna, going to. I'm, gonna that work. I'm going to do this work. But in spoken, I'm gonna, to do this work. Gonna. Similarly, wanna. Similarly, wanna. Want to. Want to. Want to is subject English and wanna is spoken English. So try to communicate with others through sound. Try to understand sound and communicate with other person, through sound. This is spoken. This is skill, not it's a grammatic. Similarly, child speak with their parents, with their friends, with their sibling, and they do many mistakes grammatically. Similarly, in many words, even they not in a position to do correct vocabulary, correct sound of a word, but parents, parents and other sibling also understand, the sound and gestures
of their small babies. So essential is thing is that try to understand to other persons through their gestures, their because body language also say something. Body language also say something. So try to understand body language. Try to understand body language. So this is a small effort, small task, small activity to do to improve listening, to improve spoken, and also learning how to improve our skill, our listening skill, our spoken skill. So everyone who is joining me in this live streaming also introduce himself. So this is a start. This is a start to communication. So this is I also give you a platform to communicate yourself. So this is the initial step to communication with other persons. How to communicate? Basically, there is a hesitation. Everyone, many person, even they know English, but they hesitate to communicate with others. They think there must be mistake. They will not in this position to communicate with other persons in real language, in real pronunciation, in real grammar. Don't be hesitate and don't take these and don't be sensitive in any condition, in any situation. This is a sensitivity that if I will speak, there will be a mistake in pronunciation, there will be a mistake in vocabulary, there will be a mistake in sequence of sentences, rules, grammar. So don't be so sensitive. Just to communicate, just to give your sense to other persons, and also try to understand through gestures. Also give gestures to your speaker, your listener, and also take gestures from your speaker. So this is also a source of understanding. Similarly, when you are reading a newspaper, so see what is the pics says, and pics also say many things. So gestures, so pics, these also a source of communication. So everyone who is joining me in this live streaming also communicate with me through your language. So don't be hesitate in mistakes, in errors. So every mistake, every mistake has also a sense that there is a success, there is a correction after it. एवरीवन जी जो जो मुझे जॉइनिंग कर रहा है वो मुझे मुझसे कम्युनिकेशन भी करें और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और व्हाट्स योर नेम एंड डू यू लव डू यू वांट टू improve your English skill और क्या आप लोग अपने इंग्लिश
स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एंड व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, व्हाट्स द बेसिक, व्हाट्स द इनर हिडन, what's the hidden thing behind it, what do you want to improve your listening as well as your spoken too. आज जी मैंने आप लोगों को वोकेबलरी भी बताई, तो उसको भी आप रिपीट करें. सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लर्निंग वीडियो. So this is a episode of upon vocabulary. So again and again, watch this video and listen vocabulary and repeat after me. Repeat after me. There is also required something to achieve something. There is also required to give a time, and you will have to spend time to you are listening in this time. So in this way you are improving your listening, but you will have to also improve your spoken. So for this purpose you will speak after me, speak after me. And similarly I've delivered vocabulary today. Also repeat word to word with me. Listen and speak at least 5 times every difficult word. Every difficult word, if you feel that is there is a problem in spoken, so repeat this word at least 5 times, at least 5 times. Then go ahead, then go ahead. And similarly, if you take some word of vocabulary which is not familiar to you and that is difficult into your tongue, so repeat that word at least 5 times, 5 times at least. Similarly move ahead and also repeat all those words which were not fluent to you and which were difficult to communicate, to speak. Similarly, go ahead and take another word and speak it loudly. जी ये कुछ मैंने वोकेबलरी और फिर उसको किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है. अभी भी आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैं आप लोगों की कम्युनिकेशन देख रहा हूँ और साथ-साथ मैं आप लोगों को जवाब देता चला जाऊँगा. ये मेरी वीडियो जो है फिर वो ये ये अपलोड हो जाएगी, तो फिर इसको जो है वो आप सुनें और सुन के जो है मेरे साथ-साथ उसको रिपीट करें. रिपीट करना ज़रूरी है, रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रो जो है वो होती चली जाएगी. तो आप आहिस्ता-आहिस्ता ये वर्ड्स जो है ना वो आपकी ज़ुबान पे भी आते चले जाएँगे. फोनोलॉजी, समथिंग अबाउट फोनोलॉजी, हाउ टू speak, how to pronounce a word, that is called phonology. So listen, सी के बाद सी के बाद 3 अल्फाज अगर आएँ, 3 लेटर, तीनों में से कोई भी लेटर आ जाए तो सी ही की आवाज़ देता है. फोनोलॉजी, सी कब सी की आवाज़ देता है? सी लेटर कब सी की आवाज़ देता है? जब 3 अल्फाज, तीनों में से कोई अल्फाज सी के बाद आ जाए. तो सी ही की आवाज़ देगा. सी के बाद आई आ जाए, सी के बाद ई आ जाए, सी के बाद वाई आ जाए.
लिसन वंस अगेन, सी के बाद अगर आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए, सी के बाद आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए। फिर सुन लें, सी ही की आवाज देगा। अगर सी के बाद आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए, बस इनके अलावा सी के बाद में नहीं जाएगा। सी सिर्फ उसी सूरत में सी की आवाज में जाएगा जब इन तीनों में से कोई लेटर आए, आई, ई, वाई। सी के बाद आई या ई या वाई, कोई सा भी इन में से आ जाए तो सी ही की आवाज में अदा होगा। दैट इज फोनोलॉजी ऑफ सी। सिंगुलर के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के लिए ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू रूल्स टू अप्लाई ए एंड एन। कहाँ ए का इस्तेमाल होना है, कहाँ एन का इस्तेमाल होना। दो रूल है। एक रूल है वोवल, वोवल लेटर्स को लिया जाता है। अब वोवल लेटर्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर सुन लें, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल लेटर्स हैं। अगर वोवल लेटर आए, वोवल लेटर से पहले या ए या एन का इस्तेमाल करना है, इसके बाद वोवल लेटर हो तो फिर आप एन का इस्तेमाल करेंगे, ए एन। अगर वोवल लेटर्स आ जाएं ए, ई, आई, ओ, यू, तो फिर आपने एन का इस्तेमाल करना है। एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ये पांचों के पांचों वोवल हरूफ शामिल हैं। कैन यू टेल मी what's a word is where all these five vowel letters are used? That is education. So in education, five vowel letters are mentioned. एक तो ये रूल है, ठीक है, कि अगर तो वोवल लेटर में से कोई आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई आ जाए, तो फिर उससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है, वरना ए का इस्तेमाल होगा। एक ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि साउंड को लिया जाता है। अगर अलिफ का साउंड आ जाए, अलिफ का, तो फिर एन का इस्तेमाल किया जाता है। एक रूल ये है कि अगर अलिफ का साउंड आए, आ का साउंड आए, तो फिर एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली दो रूल हैं ए और एन का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही कुछ। कल इंशाल्लाह ताला अगर सुबह पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग के अंदर, वरना इंशाल्लाह ताला सिमिलरली रात ही को फिर कुछ ना कुछ जो है वो आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगा। इंग्लिश जो है लिसनिंग भी आप लोगों की इम्प्रूव होगी और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं मेरे साथ-साथ, तो फिर आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव होने चली जाएगी। ठीक है जी। अ, आप लोग जो है वो इसको ज़रूर रिपीट करें। तो थोड़ा-सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ना प्रैक्टिस के लिए। लिसनिंग ठीक है आपकी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से भी देना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा टाइम भी दें तो इंशाअल्लाह ताला ग्रेजुअली अ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। चलिए जी, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।